वेलकम टू साइंस इन इस्लाम एपिसोड 1। किसी भी रिलीजन के बारे में अगर आपको जानना है तो उनके आलिमों से जानना होता है। आज का टॉपिक बायोलॉजी है। आइए जानते हैं जाकिर नाइक से एम्ब्रोलॉजी के बारे में। लेट्स सी व्हाट इस्लाम एक्चुअली सेज अबाउट एम्ब्रोलॉजी। Embryology means it's the study of the development of the human being, the early stages of human being in the womb of the mother, for those who don't know. Most of the verses of the Quran which speak about embryology are in perfect conformity with latest advances of embryology. Verses were the first two verses of the Quran to be revealed of Surah Iqra or Surah Alaq, chapter 96, verse number 1 and 2, which says, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Read, recite, proclaim in the name of thy Lord who has created. Who has created the human beings from something which clings a leech-like substance. Went in his laboratory and under a very powerful microscope observed the early stages of the embryo and compared it with the photograph of a leech. And he was astonished at the striking resemblance. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق علق From something which clings a leech-like substance. Music. Quran says in Surah Tariq, chapter number 86, verse number 5 to 7, that does not man know from what is created? He is created from a drop coming forth from a space between the backbone and the ribs. What does the Quran mean by saying the human beings have been created from a drop coming from a space between the backbone and the ribs? فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. No less than 11 different places that the human beings have been created from a nutfah. It's also mentioned in Surah Hajj, chapter 22, verse number 5, and Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 13, that the human beings have been created from nutfah, which means a minute quantity of liquid. What does the Quran mean that we have created the human beings from a minute quantity of liquid? No, I'm telling you. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا
أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد. डस्ट, स्पर्म ड्रॉप, क्लिंजिंग क्लॉट, लंप ऑफ फ्लैश, ये सब बेवकूफ़ाना बातें अगर वो कहेंगे तो अपनी जलेबी नहीं बना पाएंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। Minun chapter number 23 verse number 13 that the human beings have been created from nutfa, which means a minute quantity of liquid. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلق النطف علقة فخلقنا العلق مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. तो दोस्तों फिर से वही जमा हुआ खून, उस जमे हुए खून को बोटी बना देना और फिर उसी बोटी को ऊपर हड्डियाँ बना देना और फिर उस हड्डियों को कुछ मांस पहना देना जैसे कोई कपड़ा पहना जाता है, फिर उसे हमने अन्य रूप में पैदा कर दिया। यही बकवास वो नहीं बताया, आधी बात बताकर बेवकूफ़ बनाने वाला काम अब बहुत अच्छे से कर लेते हैं हमारे जोकर जी। कोई सेंस है इस बात की? The Quran also says in Surah Sajda, chapter number 32, verse number 8, that we have created the human being from a quintessence. And we have created the human beings from solala. The Arabic word solala, besides meaning quintessence, it also means the best part of the whole. So besides the Quran saying we have created the human being from minute quantity of liquid, it also says we have created the human being from the best part of the whole. And today science tells us that only one spermatozoa out of the millions of sperms that are emitted is sufficient to fertilize the ovum. Only one out of several millions. So this one out of several millions, the Quran refers as nutfa, minute quantity, and solala, the best part of the whole. One out of several millions. अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. And solala, the best part of the whole. One out of several millions. The Quran further says in Surah Insan, chapter 76, verse number 2, we have created the human being from nutfat and amshaj, from a minute quantity of mingled fluids. Today's science says that both the male fluid and the female fluid both are responsible for the birth of the baby. So minute quantity of mingled fluids. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। The Quran says in Surah Az-Zumar, chapter 39, verse number 6, that we have made the human beings in stages, one after the other, in three veils of darkness. According to Professor Keith Moore, he said that this verse of the Quran, when it mentions the three veils of darkness, it refers to the anterior abdominal wall, the uterine wall, and the amniochorionic membrane. That the human being is made into stages in three veils of darkness. The Quran describes the various embryological stages in great detail.
अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है. Not 3, there are 12 types of layers. The Quran mentions in Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 12 to 14, that we have created the human beings from a quintessence of clay, then made it into a nutfah, a minute quantity of liquid, then made the nutfah into alaqa, a leech-like substance, then made the alaqa into mudga, that's a chewed-like lump, then made the mudga into izama, bones, then clothed the bones with lahem, that is flesh. And then we made a different creature. Glory be to Allah, who's the best to create. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. इसकी माँ का भोला चेहरा. These 3 verses of the Quran describe the various embryological stages, the initial stages of development of a human being in the mother's womb in great detail. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. Then made the nutfa into alaqa. That means a leech-like substance. शर्म नहीं आती. चमाइलो रे. उठा के बाल्टी मारेगा साला पानी नहीं मांगेगा. It further says we made the alaqa into a mudga. A mudga means a chewed-like lump. We made the mudga into izama, bones. Then clothed the bones with lahem, that is flesh. Then we made it altogether a different creature. अब तो सच बोल दे. गलती हुई मालिक हमसे. गलती हो गई. तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें. आइए अब इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, देखते हैं क्या एम्ब्रोलॉजी इस्लाम की किताबों से पहले मौजूद थी या नहीं। इससे पहले इस्लाम के नबी मोहम्मद के जन्म से शुरुआत करते हैं और कुरान तक जानेंगे और देखते हैं कुरान से पहले ये नॉलेज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता था या नहीं। इस्लाम 1400 साल पहले का पंथ है, मजहब है। कुरान को अगर हम 1400 साल पुराना भी माने तो ये नॉलेज बहुत पुरानी है, मगर दूसरी ही तरफ 6000 साल पुराना एक मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है। ये दर्शाता है कि ये नॉलेज पहले से ही थी। मोहम्मद जो शख्स इंडिया से ताल्लुक़ रहता था, ये बात हमें हदीसों से पता चलती है कि मोहम्मद का इंडिया से कनेक्शन था मेडिकल वाला, क्योंकि मोहम्मद को पता था जब तक यहाँ के लोग विकसित रहेंगे तब तक मेरी बातों को सब कॉपी समझा जाएगा। इसीलिए मोहम्मद ने इंडिया पर अटैक करने की योजना बनाई। इसका रेफरेंस आपको हदीसों में देखने मिल जाएगा। पूरा चैप्टर इन्वेजन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है। जरा आप खुद सोचिए कि जंग करने की इतनी बड़ी वजह देना, जन्नत देना, तो कोई जंग आम देश से नहीं हो सकता। उस समय का भारत हद से ज्यादा विकसित था। इससे ये पता चलता है कि भारतीयों को इन सब ढोंगियों की बातों में ना पढ़ के अपने किताबों को पढ़ना चाहिए और वेदों को जानना चाहिए। एक ऐसी किताब जो करीबन 4000 साल पुरानी है, जिसका नाम गर्भ उपनिषद है। इसमें एम्ब्रोलॉजी से जुड़ी सारी बातें डिटेलिंग के साथ दी गई हैं, जो फिर से दिखाता है कि भारत कितना विकसित था मेडिकल साइंस में। और जिन्होंने एक किताब लिखा है उनका नाम ऋषि पिप्पलादा है, जिनको हम भगवान भी नहीं मानते। उन्होंने कुरान जैसी नकली किताब से भी ज्यादा डिटेल में ये बातें लिखी है। इसके ऊपर बहुत ही जल्द एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय सनातन। I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.